as A and B, right? So basically we have two matrix and we have some resultant matrix as a C. Right? So what we are doing is actually what we are doing in the matrix multiplication, number of columns of the first matrix, this one. Number of the columns of the first matrix should be equal to the number of the rows of the second matrix, right? So here assume that I have a 5 cross 4 matrix and this is the 4 cross 2 matrix. Can I multiply this? Yes, you can multiply this because this 4 that should be a common over here. Right, that should be common over here. So if I'm saying that I cross A cross B, that is true. But if I'm doing B cross A, so 4 cross 3 and 5 cross 4, can I multiply this matrix B cross A? Can I multiply? No, ma'am. No, you can't multiply, right? So A cross B is possible. So that is not necessary that A cross B is possible, then B cross A is possible. It's vice versa. It is depend on the what is the value for the matrix, right? So here we have 5 cross 4, 4 cross 3. So we can multiply and we have some value over here. Right, so if I'm doing the A cross B and I'll get some resultant matrix C. So when you multiply, then resultant matrix C dimensions are, so we have to check the dimensions because here the dimensions are 5 cross 4 and 4 cross 3. So we have to check the dimension for the C also. So what is the dimension? It should be 5 cross 3, right? Because this is the same, so we can assume that the dimension for the C is 5 cross 3. It means how many elements are there? 15 elements are there in the resultant matrix C, right? So how many multiplication will require? Will require the 60 multiplication by 15 cross 4. So 60 multiplication are required. Why 4? Because here I mentioned 4, right? So here 4 matrix is given. So this is the 2 matrix. I'm talking about the 2 matrix. So whenever you have a 2 cross 2 matrix, right? So multiplication is very easy. You can do the multiplication very easily and there is the no issue. But assume that there are the 4 matrix. Here I am taken 4 matrix, right? Let's take A1, A2, A3 and A4. I have a 4 matrix and I'll give the dimension for the matrix like 5 cross 4, 4 cross 6, 6 cross 2 and 2 cross 7. Right? I have given the dimensions like this. So here we can multiply this chain matrix. This is the chain matrix. Whenever you have two or more multi matrix are in the sequence, so that is chain matrix. So this is your chain matrix, right? Matrix multiplication you know, but this is the chain multiplication, right? So here we can multiply the chain matrix, but here is not a problem. Multiplication is not a problem. We can do the multiplication, but multiplication, because always whenever we are study any algorithm, you first able to identify कि what is the problem, वो optimization problem है या कुछ और है, then we will find the solution. Same here, doing the multiplication or how what is the answer, that is not our concern, right? Whenever we'll do the multiplication, obviously we'll get some answer, and here we don't want the answer. हमें आंसर नहीं चाहिए. क्वेश्चन इज दैट विच पेयर आई शुड सेलेक्ट, क्योंकि ये 4 एक साथ मैं कर सकती हूँ, या आई हैव टू चूज सम पेयर A1 A2 और A2 A3 A3 A4 और A4 A1 A4. क्या 4 में एक साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकती हूँ? इज दैट पॉसिबल? इज दैट पॉसिबल? No, चारों no. एक साथ? No, right? So we'll do that, but here we maintain the pair, and I have to decide that which pair I have to select, and if which. So basically the problem is not multiplying that, not getting the answer, but the problem is that how you can multiply them. So the problem is how multiply them. This is our problem, how multiply them or matrix, right? Okay, so this is the matrix chain multiplication problem. So this is known as matrix chain multiplication problem, right? So multiplication problem क्या है कि if we have two or more multiplication matrix are in the sequence, and the question is that how we can multiply them. Okay, so this is the matrix chain multiplication problem. It means how I should parenthesize them. ओके मुझे पैरेंथेसिस कैसे बनानी है वो हमको चेक करना है. सो सेल आई डू लाइक दिस, इफ आई एम डूइंग फर्स्ट A1 डॉट A2. ओके मैंने इसका 2 पेयर बनाया, फिर उसका जो आंसर है मैं उसको A3 के साथ कंपेयर करती हूँ, एंड देन उसका आंसर का पेयर मैं A4 के साथ कर सकती हूँ. कैन आई डू दिस? Yes, this is the first way.
that is possible. Or else I can do A1, A2 and then A3 and A4 and फिर दोनों का आंसर मर्ज कर दूं. That is another thing. Yes, I can do this. So if I want to maintain this tree for this, so I can write like this. Um, First I'll A1 and A2. Okay, we have A1 and A2, answer for A1 A2, then A3 and whatever we have answer, then A4. ऐसा मैं कर सकती हूँ? Yes or no? Yes or no? Yes, right. If I'm maintaining the tree for this, so A1 A2, let's take this A1 A2. The answer for A1 A2 something answer is that A3 A4. So A3 A4 some answer for A3 A4 and then we'll merge and this is your answer, right? So see how many nodes we required for this. Okay, so this is the tree and which is the parentheses which manner. Okay, so we can write the formula. We can write like 2 raised to n c n c of n plus 1. This is the formula that you can identify how we can or how many time we can parenthesize tree. Here we have a 3 nodes, right? Check this 1 2 and 3. This is one answer, this is two answer, this is final answer. Same, this is one answer, फिर हमने जो answer था इसके लिए किया and this is, so we have 3 answers, so we have n value 3, so you have to substitute n value in this formula, right? So if I'm substitute n, so I'll get 3 t of 3 and I have 5 ways over here. So for this multiplication I can use the different 5 ways, right? I can use the different 5 ways. Okay, so which one the thing is that which particular way that I want to select, right? I have a 5 ways, right? So which one is better that I should select? Okay, first way I have to select, that means if this the formula is there, I can represent in the different way, or I can choose the second ways, or I can choose third way, or I can choose fourth or fifth. So that is my concern, which parentheses or which pair which is the best to give the best result that I should use, right? So that's so no doubt I have I have to try all the possible solution if I'm applying the dynamic approach, right? So I have to try all the possible solution. Yes or no? अगर हम डायनेमिक यूज करते हैं तो वी हैव टू यूज ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन, राइट? वी ट्राई ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन और नॉट. So I have to try all the 5 possible solution or I have to try easy method. क्या करना चाहिए मुझे? What should I do? I have to try. हमने find किया if I have a value of n is equal to 3 and there are the 5 ways, so I have to try 5 ways or I should go for the any easy method. Okay, so we can do the 5 ways, we can try 5 ways, or very time consuming. So if I'm using all the parentheses kahin pe as n possible ways are there, so if I'm doing, then time complexity is very high, right? So I have to use the very easy method which gives me a best result, and for that we have a dynamic. Okay, so for that we are using the dynamic approach. Okay, so for that easy solution we are using the dynamic approach. So you know that we are doing in the dynamic approach, we are using the tabulation method. Okay, so dynamic programming says that you can try out all the possible solution. After that you have to pick the best one, right? So for that we'll maintain the tabulation method. So let's see that same example we have. We have a 4 matrix A1, A2, A3, A4, and I have a dimension like 5 cross 4, 4 cross 6, and 6 cross 2 and 2 cross 7. So if I want to maintain the dimensions, right? Okay, so चेक करो क्या मैं हम दोनों को मर्ज कर सकते हैं, A1 A2 को मैं पैर बना सकती हूँ. कैन आई डू दिस? Can I do this? Check the dimensions and tell me which one is common. Yes, the 4 is common, so I can make the pair for this one. Okay, can I do A2 A3? Yes. Okay, so this is the A2 A3. Can I do A3 A4? Yes. Okay, can I do A1 A4? No, ma'am. No. So you have how many dimensions? See, this is the dimension 0. Now this is common dimension, so dimension 1. This is dimension 2.
This is dimension 3. This is dimension 4. So if I want to maintain the dimension table, right, we have to store the values in the dimension table. So this is my dimension table. Okay, 0, 1, 2, 3 and 4. Okay, what is the 0 value? It is 5. And 1 पे 4, 2 पे 6, 3 पे 2 and 7. Clear? This is clear dimension table? Okay. So the concern is that we have to check that how we can multiply. So we should take a smaller value and fill the table first, right? We should take the smaller value and we fill the table first, right? So basically we are using the dynamic approach, so we are going to maintain the table. So here I maintain the table first, right? So how many object I have, how many matrix I have? 4. So I can maintain 4 cross 4 table. Table is clearly visible, students? Yes, okay. Yep. So let's give the name. I'm giving the random name MNS. Okay. So I have to multiply this matrix, right? So uh, A1, basically this one. A1 is multiply with any one. So we can say that, okay. So first of all, I'll give the object 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4 दे देते हैं. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Same 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. So we should take a smaller value and first we have to fill the table. Right. So this is our A of 1, A of 2, A of 3, A of 4. So whatever the diagonal value for the A of 1, so this all the diagonal value should be a 0 in same case. Right. If I'm talking about the A of 1, so A of 1 is not multiplying with any 1, so we take a cost as 0, right? So if I'm talking about the A of 1, so that is M of 1 1, right? This is M of 1 1. If I'm saying that A of 2, that is M of 2 2. I'm talking about A of 3, so that is this one, M of 3 3. And A of 4, that is M of 4 and 4. So these all are the 0 because the diagonal value, so we can't do the matrix multiplication. A of 1 को 1 के साथ नहीं कर सकते, A of 2 को खुद के साथ हम matrix multiplication नहीं कर सकते, right? So that's why I put the diagonal value as 0. Clear this? Clear this? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. So हमने m of 1 तो भर दिया, m of 2 भर दिया, m of 3 भर दिया, m of 4 भर दिया. Now I have to fill this. अब कोई भी एक वैल्यू भरो के चलेगा. So हम ये डायगोनल के बाद की वैल्यू फिल करते हैं. So what I have to find? I have to find m of 1 2, this one. Then I have to find this one, m of 2 3. We'll fill this diagonal. Then after we'll fill this diagonal and fill this diagonal. Okay? चलो one by one सारे fill करते हैं. कैसे fill करना है? Let's see. Okay. So if I'm talking about the m of 1 2, that means a of 1 to 2. So what a of 1 to 2? तो 1 to 2 में कितने मैट्रिक्स है? Only 2. Yes or no? So I can write a of 1 into a of 2. Right? M of 1 to 2 is मतलब 1 to 2 का मैट्रिक्स आपको चेक करना है. So in that 1 to 2, so only 2 matrix. I'm putting dimensions 4 5 cross 4 and 4 cross 6. Right? तो ये दोनों मैट्रिक्स आपको मल्टीप्लिकेशन करना है. जिस जो भी आंसर होगा वो आपका यहाँ का आंसर होगा. So let's do the multiplication. I can write 5 cross 4 cross 6. Right? This is the common, so that's why I'm taking only single dimension. That is 120. Yes or no? So my this value m of 1 2 is 120. m of 1 2 is 120. आ रहा है समझ में क्या किया मैंने?
यस और नो? समझ Yes, में आ ma'am. रहा है इसको? ओनली वन स्टूडेंट इज देयर, बाकी सब क्या कर रहे हो? Yes, ma'am. Clear. ओके, नाउ आई हैव टू फिल डायगोनल भी भरना है पहले, बाद में भरेंगे। तो ये देखो, माय सेकंड इज m ऑफ 2 3, m ऑफ 2 3। तो m ऑफ 2 3 मतलब कौन से मैट्रिक्स आएंगे? 2 2 3। तो 2 2 3 में क्या है देखो, ओनली 2, a of 2 into a of 3। what is the dimension? 4 cross 6, 6 cross 2, 4 cross 6 cross 2। what is the answer? 48, right? So my this value is 48. okay, now I have to find this one, m of 3 4। चलो फाइंड करके मुझे बोलो क्या वैल्यू आती है m of 3 4 की। 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, m of 3 4 की वैल्यू मुझे बताओ। चलो गुड, सो दिस इज 84, दिस इज 84। चलो हमने सेकेंड डायगोनल सॉल्व कर दिया, अब हम थर्ड डायगोनल लेते हैं। अब मुझे ये दोनों फिल करना है, ठीक है? ओके, सो मुझे ये भरना है, क्या है उसकी वैल्यू, क्या है ये? चलो बोलो क्या है m ऑफ, क्या फाइंड करना है मुझे? आई हैव टू फाइंड m ऑफ व्हाट? 1 3. 1,3। और दूसरा क्या है? 2,3 के 2,4, 2,4, राइट? ओके, सो इसका क्या मतलब हुआ? m 1 2 3, इसका क्या हुआ? 2 2 4। तो यहाँ पे 3 मैट्रिक्स हो गए, A1 A2 A3। यहाँ पे कितने हो गए? A2 A3 एंड A4, राइट? अब तीनों को साथ में कर सकती हूँ मैं या नहीं? तीनों को साथ में कर सकती हूँ मैं, बोलो चलो। कैन आई डू 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? नो, राइट? तो हमको 2 2 चूज करना है, तो कैसे करेंगे? लेट्स सी। ओके, चलो ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द डायमेंशन। डायमेंशंस है 5 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 6 एंड 6 क्रॉस 2। इसके भी लिख लेती हूँ मैं, 4 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 4, राइट? यहाँ पे 2 वेज पॉसिबल है। पहला देखते हैं, पहला मैं क्या कर सकती हूँ, पहले मैं A2 A3 को करूँ एंड देन A1 रिजल्ट के साथ A1 को, ये हो सकता है। या फिर मैं A1 A2 को करूँ उसके बाद A3 के साथ। और कोई पॉसिबिलिटी है इसमें? है और कोई पॉसिबिलिटी? नहीं, ये दोनों ही है। तो दोनों ट्राई करते हैं, दोनों में से जो भी मिनिमम हो वो आपको वैल्यू फिल करना है, राइट? बिकॉज व्हाट वी आर फाइंडिंग, मिनिमम कॉस्ट। आई वांट मिनिमम कॉस्ट, राइट? so as it is minimization problem, as it is dynamic approach, right? so we have to fill the minimum cost over here। तो ये दोनों में से जो मिनिमम होगा उसी मैट्रिक्स को मैं चूज करूंगी फॉर फिलिंग द डायगोनल। अंडरस्टैंड? okay, one more thing, one thing is remaining over here, that I should fill this S table also, right? तो मुझे 120 वैल्यू किसकी वजह से मिला है? 120 वैल्यू मुझे किसकी वजह से मिला है? m of 1 2, फाइंड करो m of 1 2 कहाँ है? दिस वन। सो किसकी वजह से मुझे मिला है? द फर्स्ट वैल्यू विच इज 1, सो दैट्स व्हाई मेंटेनिंग द 1। ओके, m of 2 3, तो 2 3 किसकी वजह से मिला है? ऑब्वियसली 2 की वजह से, 2 की वजह से, दिस वन। एंड m of 3 4, सो 3 की वजह से, तो 1 2 3, राइट? सेकंड के लिए थोड़ा डिफरेंट अप्रोच रहेगा, बट पहले ये शॉर्टकट मेथड है। जो फर्स्ट अप्रोच है, फर्स्ट डायगोनल, सेकंड डायगोनल, थर्ड डायगोनल। फर्स्ट डायगोनल में आपकी जो भी फर्स्ट वैल्यू है आपको चेक करके डाल देनी है, राइट? ओके, चलो अब ये दोनों कंपेयर करते हैं, उसमें से जो मिनिमम होगा वो लिखेंगे। ओके, मैम एक डाउट है,
हाँ बोलो ना। मैम वो सेकंड मैट्रिक्स किसके लिए है? ये एस वाला है वो। कौन सा? ये सेकंड मैट्रिक्स जो आपने 1 2 3 लिखा ना अभी। 1 2 3, हाँ। हाँ, ये किसके वो लिए, ये क्यों मेंटेन किया है, वो आपको लास्ट में पता चलेगा कि ये मैंने ओके। एक्स्ट्रा क्यों मेंटेन किया है, क्योंकि हमको कुछ ट्रेस करना है, दैट्स व्हाई। ओके, वो बाद में बताती हूँ मैं। पूरा खत्म हो जाएगा तो पता चल जाएगा। ओके, सो A1 A2 A3। सो A1 मतलब क्या हुआ? कैन आई राइट M of 1 1? Yes or no? Or here can I write? Okay. थोड़ी स्पेस चाहिए होगी. Okay. So here I can write the M of 1 1, and this is my value, the second value, that is for the M of 2 3. Right? Whenever you are doing actually addition, so that's why addition. So M of 1 1 क्या है आपका? देखो यहाँ से value 0. Okay. Okay. M of 2 3. M of 2 3 क्या है? 48 प्लस 48। तो ये जो आप आंसर लिख रहे हो सिर्फ इसके लिए और इसके लिए लिख रहे हो। फॉर दिस मल्टीप्लीकेशन आपको कुछ लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए ये मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू कहाँ से आएगी? सो दैट इज फॉर योर डायमेंशन। तो आप तीनों को मैच कर रहे हो। सो क्या आएगी? स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ऑफ योर मैट्रिक्स। सो ए वन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 5। सो आई एम राइटिंग 5। ओके, ए वन कर रहे हैं पहले। तो ए वन का एंडिंग पॉइंट क्या है? 4। ओके, A2 का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 4। तो 4 आ गया, रिपीट करने की जरूरत नहीं। अब उसका ये दोनों साथ में है तो उसका लास्ट एंडिंग पॉइंट क्या है? 2। सो 2। सो व्हाट इज द वैल्यू? एडिशन करो और दैट इज 88। राइट, अभी इसको करते हैं। M of 1 2 प्लस M of 3 3। ओके, M of 1 2 क्या आएगा? M of 1 2 is 120, राइट, प्लस 0। और ये मल्टीप्लीकेशन का रहा, क्या करेंगे? ये दोनों का स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट क्या है? 5 क्रॉस 4, राइट, 5 क्रॉस, सॉरी 6, 5 क्रॉस 6, राइट। और व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ लास्ट वन? 6 and 2। तो 6 तो ऑलरेडी है, तो 2। सो व्हाट इज द आंसर? समथिंग 180। तो विच वन इज मिनिमम? 88। सो दैट्स व्हाई आई फिल द 88 विद दिस M of 1 3। सो मुझे क्या मिला? M of 1 3 में 88। चलो वैसे मुझे आप M of 2 4 फाइंड करो। ये फाइंड करके बताओ वैल्यू फॉर M of 2 4। I'll give 7 minutes for this. Identify 2 4। 2 4 करो। ये फाइंड करना है, मैं ये रखती हूँ क्योंकि आपको चाहिए होगा कि क्या वैल्यू है। सो दैट्स व्हाई मैं ये स्लाइड रखती हूँ, ठीक है।
Done or not? Okay. Yes, ma'am. Okay. 104 answer. Okay. Done or not? चलो हो गया कि नहीं आंसर? Yes, ma'am. हाँ, क्या है इसका? 104. पॉसिबिलिटीज दो है, एक तो A2 और ब्रेसिस में A3 A4, तो उसका 252 आया, और सेकंड का 104. 104, right? So which one is minimum? Obviously 104. So we put the 104 over here, right? So where is the table we have? This is the 104, right? We'll fill the 104. Now we have only one diagonal remaining, which is 1 to 4, right? So let's find the m of 1 to 4. Right, see, we have to fill this one only. Okay, so I can write to 1 to 4. So how many matrix I can consider over here? Tell me, how many matrix I should consider over here? 1 to 4 है तो क्या होगा? 1 to 4, so I have to consider A1 also, A2 also, A3 also, A4 also. Yes or no? Right? तो चारों तो साथ में कर नहीं सकते, तो what should we do?
Okay, so what should we do? We have to follow the formula. So here for the M2, M1 to 4, whenever I have to apply all the four metrics, I have to write the formula. So same formula you have to use for the implementation also, right? So I want to find the M of 1 to 4, right? First of all, I'll write the common formula, then I'll write the formula for the 1 to 4. So if I have any value for I and j, here we have I is 1, j is 2, sorry 4. M of I j, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. Okay, we have to take minimum of M of I k. K, that means your dimension. Also, that what is the dimension value? M k plus 1 comma j. j है ये. Wait, अच्छे से लिखती हूँ. K of 1 comma j. ये कंडीशन हो गई, right? Plus d of I minus 1 multiply with d of k multiply with d of j. That is your formula. Okay, let's see that how formula is working over here. Okay, कैसे work करता है हम देखते हैं one by one. Okay, so what should I want to find? Okay, so I have to find M of 1 4 here. Okay, so I have to write minimum of M of, what is I value? I value is 1. What is K value over here? So K value which is depend on the your matrix. So this is your matrix 1. So you have to check for matrix 1. You have to check for K is equal to 2. You have to check for K is equal to 3. Right? Okay. And let's check that key. What is the K value we have? Because we have to object from the 0 to 3, right? So 0, 1, 2 and 3. So you have total matrix this, right? So K 0 के लिए 0 ही आएगा. So that's why we are not considering in this. So let's take for the K. उसमें से जो minimum होगा accordingly we'll put. तो पहले मेरी K value है 1, right? Plus M of K plus 1 मतलब 2, right? And J value is 4. So that's why 4, right? Plus di minus 1. Di minus 1 means what is I? I is 1. 1 minus 1. What is 1 minus 1? This is 0. मैं ये कॉपी कर लेता हूँ नीचे. So मुझे बहुत बार स्क्रॉल डाउन ना करना पड़े. Right? So if I'm putting over here, see. Sorry. Okay. D I. I, what is the I value? I value is 1. 1 minus 0. So I minus 1 कहाँ पे मैं हूँ? यहाँ पे. So I D0 की value क्या है? D0 value is 5. This one. DK. DK. What is K? K is equal to 1. 1 की value क्या है? 4. DJ. DJ की value, J की value क्या है? 4. What is 4? 4. 7. Right? Okay. So that is one thing. Comma. सब में से minimum लेना है. Now you have to change the K value. Okay. 1. What is K value? K value is 2. Right? Okay. Then K plus 1. K plus 1 3. J value is 5. Now I minus 1. What is I? Same. 5. Okay. K value will be changed. तो सिर्फ बीच का आंसर चेंज होगा, बाकी सब सेम होगा. M of, what is K value? 1 3. 1 to 4 लेना है. So 1 3. M of 4 plus 5 cross 2 cross 7. Right? So let's put the value for this. टेबल में से ही देना है. M of 1 1 which is 0. M of 2 4 क्या है देखो चलो. M of 2 4 क्या है? M of 2 4 है 104. So I'm writing directly. I have answer. Okay, you can find it. 120 plus 84 plus 2 110 comma 88 plus 0 plus 17, right, is equal to 200 minimum of, and this is also minimum of 200 comma 340 158. Which one is minimum? Obviously 158. So our last diagonal 1 comma 4, which is the 158, right, which is the 158. So here answer we have 158, right? So now we M table is filled. Now we have to fill S table also. So M comma, इतना समझ में आ गया? Clear? Yes or no? Done?
इतना Yes. समझ में आया? हाँ, ओके। सो नाउ यू हैव टू फिल दिस 1,3 1,3 कहाँ था? ये इस 1,3 कौन से वैल्यू से मिला है? 1,3 चेक करो। 1,3 नहीं होगा ये, वेट क्या था? यस, जस्ट अ सेकेंड। Okay, so we have to fill this s of 1,3, right? So where is 1,3? Yes, so 1,3 we have a 2 answer, right? And which one is give the minimum? 88, right? 88 is minimum. So why 88 is coming? किसकी वजह से आया है? A1 A2 and A3, right? A1 A2 तो दो पैर थी, तो ये A1 A2 की पैर से नहीं, A2 A3 के पैर से आया है, so that's why it is 2. तो यहाँ पे आएगा सॉरी A1, हाँ ये इस पैर से आया है, so that's why it is 1. ओके, A1 वाली पैर से आया है, so that's why it is 1. M of 24 कहाँ गया था? हाँ, इसकी वजह से हमें आंसर मिला था, so which one is that? 2. so that's why it is कहाँ गया टेबल? it's 2. M of 24 कहाँ देखा मैंने? M of 24 अच्छा इसकी 10 ये नॉर्मल है, तो सॉरी मिनिमल है, तो इसकी वजह से आया था. व्हाट इज द सेकंड वैल्यू? दैट इज 3. सो दैट्स व्हाई वी पुट हियर yes 3. M of 14 किसकी वजह से मिला है? which one gives minimum? this one. what is this one? M of 13. okay, so which one is give minimum? so you have to check the second value. this is the 3. so this is our main table, this is our fill table. अब ये table क्यों use करते हैं? so basically we have to take the answer and what is our concern? we don't find the answer, which pair we have to select, that we have to find. so we have 4 A1 A2 A3 A4, right? यहाँ से स्टार्ट करो, जैसे डायनेमिक में आप करते हो, लास्ट से स्टार्ट करो. 3 पेयर, ओके, तो कंसीडर दिस 3 पेयर. ओके, एक स्टेप आ गया हो. ओके, दिस इज 1,3 1,4 हो गया 3 पेयर. 1,3 1,3 क्या है? 1 2 3, दिस इज 3. ओके, सो दैट 1, सो योर 1 इज सेपरेटेड एंड A2 A3 यहाँ पे एक सेपरेट ऑलरेडी था, राइट? नाउ आ गया हो. ओके, ये क्या है? एक 1,1 तो that is 1 already 1 है. 2,3 this is 2 3 2,3 will says 2 values 2 matrix तो already 2 है. so this is your pair that you have select in this manner, then you get the minimum value in this table, right? तो फिर ग्राफ कैसे बनाना है, you know that. understand or doubt? any doubt over here? मैम ये 1 कैसे आया? वो पता नहीं चला. 1,3 में कहाँ पे? 1,3 1,3 ये या हाँ, सी 1,3 पे हमारे पास 2 वैल्यू थी, पर जो मिनिमम वैल्यू देता है वो हमें देना है. तो 1,3 तो यहाँ पे 2 टेबल थे 1 2, बट यहाँ पे A1 दैट इज सिंगल वैल्यू एंड दैट इज अवर फर्स्ट वैल्यू. उसी की वजह से हमें मतलब A1 A2 A3 दैट इज वन थिंग. यहाँ पे होता A1 A2 तो दैट इज A3 की वजह से आता है. तो यू हैव टू चेक द सिंगल वैल्यू. प्रीवियस केस में फर्स्ट डायगोनल में आपको फर्स्ट वैल्यू चेक करनी है, सेकंड केस में आपको किसकी वजह से आंसर मिल रहा है. तो यहाँ A1 द सिंगल वैल्यू, उसकी वजह से आपको मैट्रिक्स मिल रहा है. दो तो करने वाले ही थे बट उसकी वजह से नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस A1, सो दैट्स व्हाई इट्स 1. ओके 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 ओके. सो अब इसको इंप्लीमेंट करना हो तो क्या लॉजिक डालना पड़ेगा? ये वाला, करेक्ट? तो आई एम जस्ट सो द static values I'm taking just initial static value, I'm taking just main function, right? थोड़ा ऊपर से समझा देती हूँ, then you have to implement. I'll take integer, let's take 5. okay, I'm taking the array. I have to take the array for storing the such value, so I'm taking array randomly for 6 2 7 whatever, right? okay, then I'll take integer m 5 cross 5 matrix. okay, it should be a 0. this is example m of 1 1 तो 0 होना चाहिए, जैसे 5 cross 5 0 होना चाहिए. integer s ये m है, s है, s 5 cross 5 अगर सेम है वैल्यू so it should be a 0. same diagonal value should be 0. integer of j you have to take minimum and the q value. okay, for integer d is equal to 1, dimension 1, d is equal to d less than n minus 1, then d plus plus. ये रखा. one more for loop we required.
for loop integer I is equal to 1, I less than n minus d, I plus plus. Okay, then you have to do the j I plus d. ओके जैसे मिनिमम 3 2 7 whatever हो j i plus d करोगे आप आगे देख रहे हो फिर देन यू हैव टू राइट द लॉजिक दैट m of I k प्लस जो भी मैंने समझाया था वो m of k plus 1 j p of m minus 1 cross p, that means this is the dimensional p of k and cross p of j, right? Then you have to maintain one condition that if minimum is equal to q, then s of ij is equal to q. If it is not, then you have to count it, right? So you have to maintain it. So this is main logic and you have to implement using this logic also. So I'm not explaining, you have to implement. मैंने procedure समझा दिया है, तो कैसे करना है वो आपको देखना है अभी. Procedure is clear? Yes, ma'am. Right? हाँ तो अभी 5.2 एंड 5.3 दोनों कर दो. 5.4 मैं नेक्स्ट में एक्सप्लेन करूंगी बिकॉज बहुत टाइम वेस्ट हो गया इसमें. इट्स टाइम कंज्यूमिंग. तो अभी दो इम्प्लीमेंट करो, बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगी 5.4. तो उसमें तो नैपसेक ही करना है डायनेमिक यूज करके और ये मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन. राइट नाउ स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. आफ्टर कंप्लीट इट सबमिट द फाइल. कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, मैं यही हूँ.
तो मैम
Students, you may leave. That's overtime, right? You have to just upload it.